ट्रांजैक्शन कौन से स्टेट्स में रहता है. ओके, सो ये भी एकदम इजी है. स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. सो बिगिन व्हेन द ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स इट इज इन द एक्टिव स्टेट. जैसे हम स्लैश देके उसको एंटर प्रेस करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा. इट इज इन द एक्टिव स्टेट. Then when that transaction completed actually the execution end तक जाएगा. end जो हमने लिखा है ना स्लैश के पहले मींस execution जब होने के बाद end तक जाएगा मींस transaction end करेगा. It enters into the partially committed state and when we will give the commit command then it enters into the committed state. Okay, so transaction complete तो हुआ है, complete हुआ है, then it enters into the partially committed. But when you will give commit command, तो commit command जब देंगे तब जाके वो permanently store होगा. So then it enters into the committed state. And वो active state से भी fail में जा सकता है या partially committed के बाद भी fail state में जा सकता है. Okay, because यहाँ पे commit नहीं हुआ है. So commit होने से पहले वो fail हो सकता है, commit होने के बाद fail नहीं हो सकता. Because commit हुआ means क्या हुआ? Changes are transferred into the hard disk. Commit से क्या होता है, जो रैम में चेंजेस हुए थे वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर होते हैं. ओके, सो या तो वो एक्टिव होने के बाद तुरंत मींस फेल्ड स्टेट में जा सकता है या तो पार्शियली कमिटेड के बाद. व्हेन इट एंटर्स इनटू द फेल्ड स्टेट वी हैव टू गिव द रोल बैक कमांड एंड आफ्टर गिविंग दिस रोल बैक it enters into the aborted state. Okay, so failed state and aborted state. After giving rollback it enters into the aborted state. Okay, so just we will read this. Active: the database is in the consistent state before a transaction begins. The database is in the consistent state before a transaction begins. Transaction start होने से पहले वो correct state में रहता ही है. The transaction on the database begins by the execution of the first statement of the transaction. It becomes active. जैसे पहले उसका first statement execution start हो जाएगा, it enters into the active state. It becomes active. Partially committed: when the transaction is completed it enters into partially committed state. Here the entire transaction has been executed. Okay, failed: it enters into failed state when the normal execution cannot proceed. कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. Aborted: when the transaction is failed it should be rolled back. When the transaction is rolled back it enters into the aborted state. We had seen here. Okay, failed के बाद roll back देने के बाद it enters into the aborted state. So aborted state and the database is stored to its prior state means previous state में जाके वो store हो जाएगा. At the aborted state it has two options. Restart: if the transaction is aborted because of hardware or some software error a restarted transaction will be considered as a new transaction. अगर वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर एरर की वजह से कुछ होता है तो फिर से स्टार्ट होगा. It is considered restarted and it is considered as a new transaction. Okay, and kill: if it can kill the transaction. This is done if there is some internal logical problem or input problem or output problem. अगर आपने आपका कार्ड का नंबर ही गलत डाल दिया तो क्या होगा, वो रॉन्ग ही हो गया ना. सो वो किल हो जाएगा. आपको फिर से आपका नया कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा मींस जो करेक्ट है. So this one. And committed means the transaction is said to be reached the commit point and enters the committed state. When the transaction is committed then it has finished the execution successfully and all its changes must be recorded permanently in the database. means आपके जो commit means आपने जो changes किए थे वो सारा वो permanently आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया. Okay, so you can take a screenshot of this. इस चैप्टर में आपको क्या करना है, मैं अभी आपको ये चैप्टर भी तुरंत भेज दूंगी कल तक या आज तक. तो आज जितना मैंने पढ़ा आज के आज आपको उतना पढ़ना है. ओके, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके, आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Any difficulty in this problem, in this
What can this I say? Do you know what is single versus multi-user? आपने सुना होगा single versus user multi-user system. If it is single user, then only one user can use the system. Single user means एक ही user is using that system, and if it is multi-user, then many users can use the system concurrently. At the same time, so many users are using that system. Okay, that is called as multi-user, multiple users. In real life, most of the systems are multi-user. For example, the reservation system, which is used by hundreds of travel agents and reservation clerks at the same time. In the same way, the bank and stock exchange. जब आप reservation करते हो online, तो क्या आप अकेले होते हो क्या कि जो reservation कर रहा है? नहीं. At the same time, so many people or so many agents are doing the reservation. Okay, means at the same time हम reservation कर रहे हैं. That is called as multi-user system. Multi-user systems are based on the concept of multi-programming, which allows the computer to process multiple programs at the same time. Multi-user means क्या है? Sorry. Multi-user systems are based on the concept of multi-programming, which allows the computer to process multiple programs at the same time. आप जो रिजर्वेशन की ये डाल रहे हो इंफॉर्मेशन, वो भी वो कंसिडर करेगा, दूसरा कोई डाल रहा है उसको भी लेगा, मींस सबको मल्टीपल यूजर्स को वो एक्सेस करेगा. In multi-programming operating system, it executes some commands from one program, then suspend that program and execute some commands from the next program and so on. Multi-programming means कैसे होता है सी? A program is resumed again at the point it was suspended when it gets the CPU turn. Hence, many programs are interleaved. Means multi-programming में क्या होता है? Say suppose there are two programs A and B. Okay, so it will execute some part of A, then it will execute some part of B, then again it will start the remaining part of the A program. जहाँ से उसने छोड़ दिया था वहां से वो फिर से उस A program को start करेगा. Again the some part of B. That is called as multi-programming, or it is called as concurrent transaction. Means simultaneously A B ऐसे simultaneously चालू रहेगा. That is called as concurrent transaction. And serial means पहले A complete हो जाएगा पूरा A का program, उसके बाद B का start होगा. So that is called as serial execution. Okay. So serial means पहले A complete हो जाएगा, उसके बाद B start होगा और B का execution होगा program का. Okay. And concurrent means some part of A, then some part of B, then again the remaining part of A, means next part of A, then again next part of B. Getting? So what is written here? In multi-programming operating system, it executes some commands from one program, then suspend that program, means A here, and execute some commands from the next program, means from B here, and so on. A program is resumed again at the point it was suspended when it gets the CPU turn. Means A को उसने जहां तक सपोज 8 लाइंस एग्जीक्यूट की थी, तो नेक्स्ट टाइम वो 9th लाइन से स्टार्ट करेगा. ओके, सो रेज्यूम्ड जहां से उसने छोड़ा था वहां से फिर से स्टार्ट करेगा when it gets the CPU turn. Hence many programs are interleaved. Interleaved means थोड़े आधे अधूरे रहेंगे ना, A भी आधा रहेगा, B आधा रहेगा, उसके बाद A आके कंप्लीट करेगा उसका काम, उसके बाद B आके कंप्लीट करेगा. Okay, so these are called as concurrent execution. Okay, so in this chapter actually we will see all these things in detail, that what is serial transaction and what is concurrent transaction. Okay, so इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये पैरा भी मिलेगा आपको. Okay, so do you have any difficulty in this chapter? Do you want to miss any part that I have to explain again? Okay, then we will stop here. See here, लेट ज्वाइन नहीं होना है अभी. मैं जैसे लिंक भेजूंगी 5-7 मिनट में स्टार्ट करने वाली हूँ, सो प्लीज डोंट ज्वाइन लेट. कैसे होता है फिर आपकी स्टार्टिंग गई ना तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा. और ये चैप्टर कैसा है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. ओके, मैं आपको जितना जल्दी हो सके इसकी नोट्स
भेज दूंगी, थोड़ा आज या कल तक देखती हूँ जितना जल्दी पॉसिबल है, और सेकंड जो चैप्टर है उसकी भी भेजती हूँ। तो इसका कैसा है, जितना आज मैंने पढ़ाया उसका आपका उतना रीडिंग होना ही चाहिए। एक रीडिंग में ये स्टार्टिंग का समझ में आ जाएगा शायद, बट आगे आगे जाके आपको एक रीडिंग, दो रीडिंग, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आपको पढ़ना है, उस दिन का उस दिन, ठीक है। तो ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एग्जांपल्स भी है, काफी कुछ है। ओके। और सेकंड थिंग, अटेंडेंस तो मैं आज भी डाउनलोड कर दूंगी, उस पे से लगा लूंगी। कल ऐसे पॉसिबल है कि आपका फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का होगा, वो मैथ्स का लेक्चर 12 to 12:40 तक ही होगा, क्योंकि मैम को शायद दूसरी क्लास पे लेक्चर होगा। तो बताने का मीनिंग ये है कि मैं 12:40 को अगर लिंक डालती हूँ तो आपको तुरंत ज्वाइन होना है। ओके, इफ इट हैपेंस, हो सकता है